Hello, my dear viewers. I'm Seema Chhoriya, and I welcome you all to another insightful session on great principles. Consistency is the key to success, and a mind and body that is in sync to achieve its goal, it does. With this belief, my guest has along his life maintained a balance that has ensured progress in his personal and professional life. Please join me in welcoming Mr. Durgesh Sharma, Principal, Jasidih Public School, Jasidih, Jharkhand. Welcome to Great Principles, sir. It's truly an honor to have you today. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Good evening, ma'am. Good evening to you too, sir. Welcome to Great Principles. And to all my dear viewers, we'll be doing this conversation bilingual so as that we can reach out to many of you out there. So let us begin by knowing where it all started. So, sir, once upon a time, you chose to become a teacher with the vision to help nation through education. And today, you can do all that with all the reforms coming in and the opportunities of making rural India better. So tell me, sir, what reforms should be introduced in learning strategies that will help students and teacher in rural India? And we all know that education is actually required there. So let us hear it Yeah, from you, sir. yeah. Actually, I'll start here with one slogan that we used to pronounce. It is education is powerful weapon. Do you agree with me regarding this, I do, sir. ma'am? But I am not agree with this because education is not a weapon. Education is a tool, or else education is a skill. Instead of weapon, we Mhm. should use tool or else skill. Yes, Yeah, that is more appropriate word. When we will understand the meaning of these two words and correlate with the education, then only we will understand the exact meaning of education, what is, and how to provide the own generation for our future. Though we are working in present, but we will be building our building blocks now, then only our next generation will be working with the education only. That is why we can conclude here education is a skill or tool by which we can correct something, whatever reforms we want. Yes, like Raja Rahman, Mahatma Gandhi, etc. Are the reformers. What they use their education to uplift the society, or else skill provides ones to upgrade themselves or else the surrounding. As a group, as a leader, you can upgrade your surroundings, and that will work from point to point. I truly, respect your belief, sir. And as Nelson Mandela said, that education is the most powerful weapon that can change the world. So here we are trying to, understand this word. We are trying to replace the word weapon with the Yeah, tool because the negativity of the word weapon, at times doesn't get into the mind of the children. So wonderful thought, a very different perspective. I really liked it. So moving ahead in our conversation, sir, to be of any good to the society and the nation, and we are ourselves most capable to do the best of our abilities, sir. ये कहा जाता है कि अगर आप ही हैं जो खुद को बदल सकते हैं, आप ही हैं जो खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कोई और आपकी जगह पे काम नहीं कर सकता है, तो इट ऑल स्टार्ट्स विद यू योर सेल्फ फर्स्ट. Yes, mentors are there, but if you don't put in any exactly. effort, nothing is going to happen. So tell me, how important it is for our teachers to upskill to teach better, because अगर टीचर्स ही ट्रेन नहीं रहेंगे, वो हमें नहीं ज्ञान दे पाएंगे. जैसे मैंने कहा, पहले हमें खुद को सिखाने की जरूरत है, खुद को बिल्ड करने की जरूरत है. सो व्हाट आर योर थॉट्स? एक्चुअली टीचर्स का ट्रेनिंग बहुत कंपलसरी है, एंड आज का टाइम पूरा चेंज हो चुका है. द सिनेरियो इज कंप्लीटली चेंज. अर्लियर देयर वाज अ स्टूडेंट हु यूज्ड टू फॉलो वर्ड टू वर्ड द टीचर्स. वर्ड टू वर्ड चल रहे थे, हम लोग टीचर्स को सुन रहे थे. बट राइट, नाउ राइट. व्हाट द सिनेरियो इज, students are parallel to the teachers. They have the equal knowledge apart from the experience, apart from the dealing. What they don't know, everything is over internet. They can access that easily. They have that all the potentials, but how to correlate with their life, how to correlate with their previous knowledge, pre-existing knowledge, that is the work of teacher. So for that, a teacher should be trained. Teacher is not trained in a way to such subject, in a way to how to teach. It's about how to grab the attention of the students, how to correlate the material with or stuff which they are having, the knowledge they are having, as per the level of the students. Teacher as a teacher, वो लोग अपने जो भी नॉलेज है,
सब्जेक्ट में बहुत सब्जेक्टिव बातों को हाई फाई लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बट वो स्टूडेंट के वर्क यूज दैट, बट स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है, वो स्मॉल माइंड्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत कंपलसरी है। एंड जैसे सिनेरियो चेंज हुआ है इन कोविड, जिससे हम उभरे हैं, अभी पूरा देश पूरा विश्व उभरा है जिससे, तो हमने ये समझा है कि हाँ, अब हमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे कई सारे पर्सपेक्टिव्स में। आज जो हम वर्चुअल इंटरव्यू कर रहे हैं, ये इस कोविड की ही हम मान सकते हैं एक उपलब्धि हम सभी लोगों के लिए। हमारे जितने राइट। भी टीचर्स आज तक थे जिनको कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप का यूज करना नहीं आता था, वो आज इसमें बहुत परफेक्ट है। उनको किसने सिखाया? स्टूडेंट्स ने सिखाया। तो एक पर्सपेक्टिव तो हमारा चेंज हुआ है कि हम किसी से भी सीख सकते हैं। आज तक पढ़ा था एज ए टीचर कि बच्चों से किसी से भी सीखना चाहिए, बट अब हमने रियलाइज किया है कि हाँ, हम किसी से भी सीख सकते हैं। सभी टीचर्स ने अपने बच्चों से, घर में छोटे बच्चों से, स्टूडेंट से सीखा कि बेटा इसको कैसे कौन करेंगे, ओके फॉर फ्यू मंथ्स, बट नाउ वी आर वेल विद दैट ओनली बिकॉज ऑफ देम। सो हमारा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होना है। उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए, माइंड थिंकिंग को ब्रॉड करने के लिए और बच्चों के लेवल पर जाने के लिए ट्रेनिंग्स बहुत रिक्वायर्ड है टीचर्स के लिए, इवन सभी के लिए। ट्रेनिंग्स आपको कॉन्फिडेंस देती हैं उस लेवल पर उनके लिए अच्छा करने का। Absolutely, sir. Very rightly said. And I think I really love the point where you mentioned कि हर बच्चा अलग है, हर किसी का capability अलग है, तो आपका teaching simple, effective. Your teaching should be simple, effective, lucid, with the child can understand. एक बच्चे को समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, and continuous जी हाँ। आपका भी upgradation बहुत जरूरी है, upskilling बहुत जरूरी है. And yes, sir, COVID did made us realize that we all need to keep on this journey of या continuation of learning. We all need to be a lifelong learners. So that is very much required. And I love the thought where you expressed that we should be open to learn from anyone. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही बच्चों को पढ़ाती है. Things have जी changed. And yes, students are teaching kids, and now we are very soon we'll be seeing the classes जहाँ बच्चे खुद अपने आप पढ़ रहे हैं, teachers हाँ, सिर्फ facilitators हैं. Wonderful ट्रू। thoughts, sir. So let us move ahead to our next question. So a teacher not only just shares information, I mean, information to Google भी दे देता है, right? Teacher ट्रू। also teaches us the way of life. कैसे हमें कोई चीज़ को interpret करना चाहिए, किस direction में जाना चाहिए. You know, every child thanks educator for what they have made them. They don't thank them कि मैम आपने मुझे पढ़ाया उसकी वजह से मैं काबिल बन गया. वो इसलिए thank करते हैं कि आपकी वजह से मैं एक बेहतर इंसान बना हूँ, right? सो एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है कि हम जब अपने हमारे जो बच्चों की नज़र में जो टीचर्स की वैल्यू है, उसी तरह हम टीचर्स को अवार्ड्स देते हैं, कंट्रीब्यूशंस के तरीके से रिकॉग्निशंस देते हैं. सो ऐसा कोई अवार्ड है जिसने आपके कंट्रीब्यूशन को एजुकेशन फील्ड में जस्टिफाई किया है? इट्स नॉट लाइक अबाउट दैट कंट्रीब्यूशन को हम लोग जस्टिफाई करें और उसको अवार्ड्स में नाम दें। इट्स अबाउट लाइक स्टूडेंट्स, वो हमारा एक अवार्ड है, हम कह सकते हैं। जब वो आज के कुछ सालों बाद हमें जैसे पुराने स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर कैसे हैं, कहाँ हैं, बर्थडे विशेस कर रहे हैं, कुछ भी, सो इट इज अ बिग थिंग दैट कि हाँ, वो बर्थडे याद किया हुआ है आज तक कि इसके टीचर का बर्थडे आज था, या मेरे टीचर से मैं पहली बार इस दिन हम्म. मिला था, या टीचर आपके साथ मैं एक्सकर्शन पर पहली बार इस डेट में गया था। दीज ऑल आर दीज थिंग्स आर द रियली बिग थिंग्स फॉर वी पीपल। इसके लिए कोई अवार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अवार्ड मुझे मिले हैं, बट ठीक है, मेंशन करना ठीक नहीं होता है वो। ओके, इट्स क्वाइट कॉमन फॉर एवरीवन। इफ वी आर वर्किंग, कंसिस्टेंसी इज देयर, डेडिकेशन इज देयर, ऑब्वियसली ऑल विल गेट दैट। हाँ, अप्रिशिएशन मिलता है उनसे, सपोर्ट भी मिलता है, प्रमोशन होता है लोगों का, लोगों को सब थिंकिंग ब्रॉड होते हैं कि हाँ भाई, वी विल आल्सो गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, या इंस्पिरेशन मिलता है, वो सही वर्ड वर्ड होगा उसके लिए। अपने करियर में मिले हैं अवार्ड्स, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है वर्क को। सो मेन थिंग इज दैट अगर हम हमारे वर्क को डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, एक प्योर फीलिंग के साथ करते हैं कि हाँ, वी वांट टू सर्व। टीचिंग इज नॉट a सर्विस, टीचिंग इज नॉट a जॉब, it sorry it's let me correct this, teaching is not a job, it is service. Yeah. Yeah, there are few service in this world, not only in India, कि उनको सर्विस नाम दिया है। रिमेनिंग तो जॉब है 3 to 5 और 10 to 6 वाली, ये सर्विस है, ये फुल टाइम है, 24 आवर्स है, कभी भी बच्चा आपको कॉल कर सकता है। आप हमेशा बच्चों के लिए सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ा अवार्ड है आपके लिए। जब बच्चे आपको याद करते हैं, उनके पेरेंट्स आपको रेस्पेक्ट देते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड एक टीचर के लिए ये होता है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, अपने टीचर पर जितना बिलीव करता है उतना किसी पर नहीं करता। टीचर्स, हम लोग नेशन के बिल्डर हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सपोर्ट किया है
आगे बढ़ने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए मैं आभारी भी हूँ कि हाँ, शायद उनकी प्रेरणा से मैं और आगे बढ़ पाया और अच्छा करने की सोच पाया। आपकी संस्था ने भी मुझे का अवसर दिया कि मैं अपनी बातों को और आगे पहुंचा पाऊँ और आगे अपने आप को और अपग्रेड अपग्रेड करके अच्छा कर पाऊँ। जी। I completely agree with you, sir. Yes, teachers are the real architects of the society, and yes, for teachers, for students, teachers are always right. आप 2 साल या 5 साल या 10 साल किसी भी एज में आप बच्चों को जी। पूछेंगे तो मेरी मैम ने ऐसा बोला है तो वही सही है. दैट इज द आंसर दे गिव इवन इन द एज ऑफ गूगल. सो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. एंड आपने सही बोला, स्टूडेंट्स ही सबसे बड़ा अवार्ड है. जब स्टूडेंट्स लाइफ में कुछ स्टैब्लिश हो जाते हैं तो एक टीचर को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जी। मेरी सर्विस आज पूरी हुई, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है. सो ग्रेट टू नो योर थॉट्स ऑन दिस. एंड जो आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू योर जर्नी थ्रू योर लाइफ. और मुझे पता है कि आपकी जी। लाइफ में आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत मेहनत की है और फिर सक्सेस आपको मिली है, जिसका एक और काम था कंसिस्टेंटली आप लगातार काम करते रहे. लेकिन सर, हर सक्सेस के पीछे भी एक मेंटर का हाथ होता है, एक गाइड का हाथ होता है. जहाँ हम कहीं हेल्पलेस हो जाते हैं, जहाँ हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ हमें किसी की ज़रूरत होती है. तो वो कौन जी। से एजुकेशनिस्ट हैं जो बिल्कुल। आपके एडवाइस, सपोर्ट और इंस्पिरेशन हैं? To whom I am in the contact now also, and they used to suggest me for every difficult or easy situation, whatever I asked them. And yeah, they used to promote many, like now this is the world of WhatsApp and Facebook, so they used to share very information also to upgrade ourselves. Let me tell you the first name. That she is Mrs. Panchali Das Gupta Sahu. She was the principal of DPS, Chhatarpur, Madhya Pradesh. I don't know what she's seen in me, but yeah, she promote me a lot. She encouraged me a lot to work well. Yeah, and that is because of her. Maybe now I am in the position of a principal also. She was the like my idol first of all, and then yeah, there are many. Next is Shaji Matthew, Mhm. whose heard names I have heard a lot of time. And yes, I have interaction with them. Few of my friends, Pradeep Srivastav, Vinay Kumar Sharma, they also support me. They see a spark in me and they said, no, you should be on that position. You should go ahead. We are there for your backing, etc. Yeah, there were Manoj Kushwaha sir. He was the chairman. And let me tell you one more name, Dr. Bhartendra Dubey. He's the current secretary of my organization. We are a group of institute actually. We are not only one school. We are a group of institute. You can establish yourself in these manners. We are going to open few group of schools as well over here. So yeah, these are the mentors they used to promote, and they like yeah, mentors makes us successful. If I am as a teacher making my students successful, they are my teachers who is making me successful. I believe this. Right. And when your students succeed, that is when you True. succeed, right? So wonderful. It's great to know that you have such amazing list of mentors and people who are there to support you in your tough times and guide you whenever you go wrong. And yes, applaud for you when you do something deserving. So great to know this, sir. We wish you that all your goals are accomplished in this year. So, on this beautiful note of mentorship and accomplishments, we have reached to a very interesting segment of the show. This is called rapid fire round. You have to answer in one word or one Cool. sentence. All right, sir? So, we begin with our very, very first question. Okay, ma'am. Yes, ma'am. My first question to you: you spend your recreational time indulging in activities like? Playing with children. Wonderful. I used to play with children. Great. So, when you're not playing with children, what else do you do? I'm reading. All Either right. reading or playing with the children. Yeah. Because Great. evening time I have fixed with the students only. Because we are having a hostel over here. So we used to play with them. Because it is their time too to Right. make them fit. Yeah. So it's you are running a hostel. That's interesting to know. Knowing going ahead in your next question, sir, we would like to know a funny incident or a weird incident in your life. That I have to recall a lot.
I cannot say in one word actually. No, you can use a statement. Okay, funny or weird, any. Yeah, there are many very like when we are at tense and we are working. So sometimes we are having our specs over and we are searching that where are my specs. A team is sitting, the teachers are sitting, vice principal sitting, everyone is sitting, and I am searching that where are my specs. I have to read something, and then they used to say that sir, it is on my head. These are the funny one, Yeah, yeah. We are so and we are lost. too. It happens. It happens with everyone. We are so lost in our own work that we don't recall. All right, we're Yeah. there. Wonderful. So you mentioned that you love reading. So who is your favorite author and which is your favorite book? What if I'll keep it secret? Because I used to share these information with the students. There are many. Don't let me promote any one name because that will influence other readers also. They will change their genre. If I'll promote someone, if I'll say the name, other viewers of ours will be changing their genre. That okay, let me go through these. There are a few spiritual books also. Yeah. Mhm. So So this any is book like that you a would kind of a recommend? controversial question. All To being, right. So it any can be book like that you would a reader recommend? eats the. Okay, yeah, it is. It is. Leader eats at last. That is the book. Mhm. Leader eats at Leader last. eats at last, Yeah, just like the captain of the ship leaves the ship at last. So at similarly, the last. leader leads Yeah, at that is last. that is like. Wonderful, Yeah. interesting, very interesting. So to all my dear viewers, go ahead and grab this book. It might change the leader within you. Going ahead to our next question. So you enjoy traveling, right? Yes, ma'am. I do. So where did you travel last? I have traveled last to like Shimla, Kufri. These are the two places. Only 5 to 6 states are left for me to visit in India. Rest I have visited. Wow, wonderful. So from the travel diaries of India, which place is the one that you would like to visit multiple times? Yeah, we can conclude. I can conclude over here that Kerala, that is fine Kerala. for me. Yeah. All right. So you would like to visit Kerala again and again, over and over. Wonderful. Now coming to the next question. Jasidih is famous for. Jasidih is famous for the Jyotirling, Baba Badrinath. That is the 12th Jyotirling in India. And Jasidih is the main city by which you enter through. Sorry, may I repeat this? Yeah, sure, sir. After that, you can edit. Yeah. Yeah. Jasidih is famous for the Baba Badrinath Jyotirling temple. That is the 12th Jyotirling temple in India. And it is the holy city of Lord Shiva. All And it is right. the entry gate also to enter in the Jharkhand. Okay, that's interesting. Yeah. So to all my dear viewers, I suppose that, sir, correct me if I'm wrong. Jasidih is also a hill station which is Yes, close ma'am. to Devgarh, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, It is very wonderful. near. Very near. All right. Coming up to the last question. Which activity of yours allow you to know more about your own self? I am serving. This is the main thing. Mhm. So there should not be a 0.01% by which I will not be able to serve my society, my students. That is the thing. These these statements I used to keep rotating in my mind that I am the one and I have to serve. This gives me a lot of inspiration to work and to continue my dedication, passion. All right. It was wonderful and interesting to know you in this segment. So now we have reached the last question of the show, which is called Viewer's Choice Question. So my Okay. viewers send me a lot of questions, and Okay. this one is the one which I have picked for you. They say that एजुकेशन हमारे कंट्री में एक प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए और उसी के साथ साथ में हेल्थ केयर भी अभी अगर हम देखते हैं तो देर आर लाइक करोड्स ऑफ रुपीज बीइंग स्पेंट and we saw our situation when covid-19 was here. So do you think, sir, ki educators also are the part of essential services our country needs? What do you think should be the educators role in serving the country in terms of other services which are expected from educators apart from imparting education? Actually, government has changed this education's perspective. They have used teachers in all the ways. Maybe you might be knowing for everything they are including teachers, but it Yeah. should not be like that.
we should teachers should be used for the teaching purposes, for the social reform. Yes, there are many persons they willingly doing the social reforms for society में जो भी अपग्रेडमेंट होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उस पर वर्क कर रहे हैं. हाँ, टीचर्स कई सारे ऐसे हैं जो किसी चीज के बारे में ना सोचते हुए अपने सब्जेक्ट को और सोसाइटी के लिए ही सोच रहे हैं. मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बच्चे उनके मैनी, देयर आर मैनी, नॉट ओनली वन. जिस तरीके से आर्मी, नेवी, लाइक डिफेंसेस एंड फार्मर्स हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से टीचर भी बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग नेशन में काम कर रहे हैं. जब एक हम लोग सो रहे हैं और आर्मी वाला गेट पर खड़ा हुआ है भारत देश के और हमें सेफ रखे हुए हैं, सारी सीमाओं पर लगे हुए हैं, अपनी जान को बाजे पर लगाए हुए हैं. एक किसान हमारा पेट भरने के लिए रात को 3 बजे उठकर बारिश में पानी भरे हुए खेत में जाकर खेती कर रहा है, बुगानी कर रहा है, कई सारे काम कर रहा है. उसी तरीके से टीचर्स भी अपने कई सारे पर्सनल वर्क को साइड करके अपने अंदर के सौरों, जॉय सबको हटाकर केवल बच्चों के सामने एक स्माइली फेस लेकर जाते हैं. वो अपने एक्सप्रेस नहीं करते कि ज्यादा खुशी को ना ही दुख को. वो बच्चों के लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं. तो यस, वो नेशन को सर्व कर रहे हैं हर तरीके से. किसी के आगे या पीछे होने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ कि कौन ज्यादा कर रहा है. सभी एक समान है, सभी एक साथ कर रहे हैं. इसके साथ में एक नाम और मैं ऐड करूंगा जो कि हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी कर रहे हैं. लेकिन कि हेल्थ वर्कर्स, डिफेंस, फार्मा, हमारे टीचर अगर अच्छे होंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव, मेरे टीचर बहुत अच्छे थे इसलिए मैं टीचर बन गया. अगर मेरे टीचर डॉक्टर होते तो शायद मैं डॉक्टर बन जाता. वो मुझे प्रमोट करते डॉक्टर बनने के लिए तो शायद मैं डॉक्टर बनता. लेकिन उन्होंने मेरा माइंडसेट इस तरीके से चेंज किया कि नो, यू कैन, लाइक maybe once I have shared with my colleagues over here that अगर आप एक टीचर हैं तो आप 40 बच्चों को सही कर रहे हैं एक दिन में. अगर आप एक लीडर हैं तो आप 40 टीचर्स को करेक्ट करके 400 बच्चों को सही कर रहे हैं. तो यस, टीचर्स के साथ आप 40 बच्चों को सही करेंगे, वो 40 बच्चे अपने 80 पेरेंट्स को सही करेंगे, वो 80 पेरेंट्स अपनी सोसाइटी को सही करेंगे. जी हाँ, कई सारी चीजों में. तो टीचर्स आर द सर्विंग factor of our nation. Completely agree with you, sir. Yes, for a progressive nation, we have the architects of the nation, which are our teachers. और teachers का Yeah, बहुत major role है, जैसे कि सर ने बताया. When the teacher is guiding a student, that student guides the society and the parents, and in turn the entire society. So that is why government is emphasizing or bringing in a lot of reforms in education in terms of introducing. अभी जैसे हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, तो बहुत सारे ब्राउनी पॉइंट्स थे स्कूल्स में जिन्होंने ऐसा कुछ कैंपेन अपने स्कूल में रन किया है. अभी गवर्नमेंट का चल रहा है, क्या आप कोई लाइफ स्किल सिखा रहे हैं, क्या आप कुछ अलग कर रहे हैं, तो प्लीज कनेक्ट विद अस. So with all these things, I completely agree with sir that yes, teachers have a major role to play in the building of the nation. So this was Durgesh sir sharing his views, his journey with us. So Durgesh sir, thank you for opening a window to never thank you say so much, no ma'am. to knowledge and optimism. This is what I learned from you कि आप कभी भी सीखने से पीछे मत हटिए. आपको नॉलेज बहुत सारी मिलेगी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कंसिस्टेंटली काम करते रहिए. थैंक यू सर, वी रियली फील ऑनर्ड टू Thank हैव you यू so ऑन आवर much, शो ma'am. टुडे.